नमस्कार दोस्तों और जय हिंद। आप सभी को स्वागत है इन माय चैनल 1971 वॉर बुक सीरीज। तो दोस्तों, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड रिगार्डिंग द 32 Mahar Regiment's contribution in the Bangladesh Liberation War of 1971। जैसे आपने पिछले एपिसोड में देखा है, आई हैव टॉक्ड अबाउट हु वाज द कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरगोबिंद सिंह, how the battalion moved out from Mizoram to join in the operations alongside the Kilo Force Infantry Brigade to take on the Pakistanis through the Belonia Bulge and head out towards, with the main objective of the battalion to liberate all the area up to Chittagong. Main fighting force against 32 Mahar Regiment was going to be Pakistani Army's 91 Infantry Brigade and the 97 इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ब्रिगेड। दोस्तों, मैंने जैसे बताया था किलो फोर्स इन्फेंट्री ब्रिगेड के बारे में, विच वॉज बीइंग लेड बाय ब्रिगेडियर आनंद स्वरूप, जिनको बाद में महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। ही लेटर बिकेम लेफ्टिनेंट जनरल। सो किलो फोर्स इन्फेंट्री ब्रिगेड वॉज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द 23 माउंटेन डिवीजन। तो 4 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट, 9 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट, 10 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट जो पहले पाकिस्तान फौज में था, अभी मुक्ति वाहिनी में आ गया था। These 3 infantry units were also part of the Kilo Force Infantry Brigade alongside 31 Jat and 32 Mahar. I've explained in the previous video. Now, ये 3 infantry battalions were still under the command of Major Abdul Salek Chaudhary. लेकिन ये 2 infantry battalions were under the command of 2 Indian Army lieutenant colonels. And इन सब का कमांडर था ओवरऑल ब्रिगेडियर आनंद स्वरूप। सो देयर शुड बी नो, आई वुड से, मिसअंडरस्टैंडिंग। मेजर अब्दुल सलेक चौधरी was still in command of his own 3 infantry battalions। और मैं क्यों बार बार मेजर अब्दुल सलेक चौधरी के बारे में बता रहा हूं रिगार्डिंग 32 महार रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी, ये मैं इस वीडियो के सीरीज के अंत में आपको बताऊंगा। तो प्लीज हैव पेशेंस एंड लिसन टू द रेस्ट ऑफ द मार्च ऑफ द 32 महार टुवर्ड्स चिटागोंग, पार्ट बाय पार्ट। तो दोस्तों, आइए थोड़ा मैप से आज जान लेते हैं। तो मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था इन द फर्स्ट एपिसोड that this is Belonia Bulge, this is the international border, okay? This is the road that leads all the way towards Dhaka, connecting Sylhet as well. From Chittagong down south, this is the Bay of Bengal, this is the town of Feni, okay? This is known as Bangladesh ka chicken neck. Anyway, this leads all the way towards Chittagong. यहाँ पे पाकिस्तानी फौज का 91 ब्रिगेड एंड 97 ब्रिगेड था, and probably this area was completely controlled by these 2 infantry brigades. 15 Baluch of the, I guess, Pakistani forces were present at Belonia Bulge, मैंने जैसे दिखाया है। This is the town of Belonia in India again. So Kilo Force Infantry Brigade का part था 32 Mahar Regiment, and this battalion was at Shantir Bazar when this attack of 2 Rajput and 10 East Bengal Regiment was going to go in towards Belonia Bulge. So 2 Rajput was an infantry battalion of the 83 Mountain Brigade, and 3rd Dogra was going to Chittagong area, okay, as you can see. So 10 East Bengal Regiment, जैसे मैंने बताया, Kilo Force Infantry Brigade का part था, the same brigade to where 32 Mahar belonged. तो 10 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट, एज यू कैन सी, मुक्ति वाहिनी का यूनिट था। तो अटैक जब शुरू हो गया, 2 राजपूत एंड 10 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट वेंट इन टुवर्ड्स दी 15 बलूच। One company of the 32 Mahar Regiment was at Savroom here. Okay, they were going to go in, I think, in this direction, while one company of the 32 Mahar Regiment, I think this was Charlie Company, yes, Charlie Company under Major Gurung was going to attack with the 3rd Dogra onto Chittagong, okay?
थर्ड डोगरा का एक कंपनी था यहाँ पे. आई थिंक 1 महावीर चक्र posthumously was received by an officer from the थर्ड डोगरा. एंड 32 महार रेजिमेंट का ये कंपनी by Major Gurung attacked the enemy positions and prevented Pakistani reinforcements coming into Belonia Bulge to help the 15 Baluch. I mean, I should mark it in red actually. Yeah. 15 बलूच का सारे reinforcements को stop करना was their main target. So this area was actually cut off. 15 बलूच को cut off करना was the main target, and I think this company also sat here and cut off this area. So Pakistani ये दो brigades 91 and 97 brigade, they didn't have any access to this बेलोनिया बल्ज. तो 15 बलूच वॉज लिटरली ट्रैप्ड. फेनी में भी पाकिस्तानी फोर्सेस का प्रेजेंस था एंड दे कुडंट ऑल्सो रीइंफोर्स द 15 बलूच. दिस कंपनी एट सावरूम वॉज लेड बाय मेजर हेनरी भास्कर एंड दे पुट डाउन अ स्टिफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द पाकिस्तानी फोर्स. तो दिस इज द फाइटिंग एरिया. अल्फा कंपनी ऑफ मेजर हेनरी भास्कर वॉज सब्जेक्टेड टू हैवी आर्टिलरी बराज. और ये बेलोनिया बल्ज एरिया के आसपास को सिक्योर जो काम 32 महार ने किया था, यहां पे 32 महार का कैजुअलिटीज भी हुआ था. सेकेंड लेफ्टिनेंट महेश चंद्रा एंड सूबेदार दान सिंह प्रूव देयर ब्रेवरी ऑन बैटल एंड सेकेंड लेफ्टिनेंट महेश चंद्रा वाज एक्चुअली वुंडेड. और बेलोनिया बल्ज को सिक्योर करने में जो फाइटिंग हुआ दुश्मन के साथ, वहां पे 32 महार के 2 जवान शहीद हो गए थे, सिपॉय बालादत्त एंड सिपॉय EBR गायकवाड. अभी तक 3 दिसंबर का सुबह आया नहीं था. 3 दिसंबर में द एक्सिस ऑफ एडवांस ऑफ द 32 महार रेजिमेंट वाज गोइंग टू हेड आउट टुवर्ड्स चिटागोंग थ्रू द फेनी एक्सिस. कमिंग बैक टू द मैप, लेट्स अंडरस्टैंड द एक्सिस ऑफ एडवांस. So दोस्तों, I hope you can see the map now properly. As you can see, this is the Belonia Bulge I was talking about in the previous map. This is Chittagong. Charlie Company of 32 Mahar is still here. Alpha Company is at Pathan Nagar, and 83 Brigade and Kilo Force Brigade of the 23 Mountain Division were going to go towards Chittagong all the way. Pakistani forces are here. Now, only I will focus on this entire video series only on 32 Mahar Regiment. So I'll be not talking about the other infantry units of Kilo Force or 83 Brigade or any other infantry unit of the 23 Mountain. I'll be solely focusing on 32 Mahar. So 32 Mahar is going to follow this entire axis. It will cover all these areas starting from Pathan Nagar, Feni, and then all the way taking this road towards Chittagong. Okay, this is the road connecting Dhaka also. I mean, going to the north, going towards Sylhet. So it will cover the areas of crossing the Feni river. It will cover the areas of Mir Sarai, Sitakund, Kumira Ghat, Sitalpur, Keshavpur, Bhatiyari, and eventually towards Chittagong. So let's see the advance now. तो फेनी कैप्चर करने के लिए 32 महार रेजिमेंट का ऑपरेशन 3 दिसंबर नाइट से ही शुरू हो गया था. 5 दिसंबर में गंगाधार बाजार को कैप्चर किया गया था एंड 6 दिसंबर में खलीफा दिघी एंड चिरंगा दिघी को कैप्चर किया गया था. गंगाधार बाजार एरिया में अल्फा कंपनी दैट वाज पोस्टेड एट पठान नगर मूव्ड आउट टू कैप्चर गंगाधार बाजार. दिस कंपनी वाज सब्जेक्टेड टू हेवी फायरिंग, बट इवेंचुअली it managed to move out and push out the Pakistanis from Gangadhar Bazaar area. And जब फेनी से पाकिस्तानी फौज भाग गए थे, तब 32 महार, तब 83 माउंटेन ब्रिगेड भी एंटर किया था. लेकिन किलो फोर्स का 32 महार रेजिमेंट से मेजर हेनरी भास्कर एंड हिज अल्फा कंपनी वाज द फर्स्ट टू एंटर लिबरेटेड फेनी. Feni was finally in the hands of the Indian Armed Forces and the Mukti Bahini, free from Pakistani occupation by the 7th of December.
8th of December से the move was going to head out towards Chittagong from Feni and crossing the Feni river. उसके बारे में हम जानेंगे in the next video. Thank you so much for listening. In the next video, we are going to move all the way up to Chittagong.